Jai Hind दोस्तों, and I welcome all the lovely viewers of Youth Weds Passion Show and all the charming aspirants of How to Crack SSB. And once again, I welcome all of you to the 27th episode of Youth Weds Passion Show. And today is the concluding episode for the psychology because till the last episode we have completed SRT, situation reaction test, and today I will be talking on few of the very important things, and finally the concluding test of psychology, that is SDT, self description test, also called as self appraisal. So let's begin the today's episode. Now, most importantly, before I start SDT, as I promised you guys in the last episode, let me first of all tell you that why such a graph has been created in psychology where tests move like the pressure or the complexity grows exponentially and then it comes to a neutral level. If you remember, मैंने last episode में आपसे discuss करा था ना, TAT starts, then WAT pressure increases because of the time pressure and everything. SRT, it goes to a maximum level and then neutralize. Now why this has been done? Let's understand this first of all. That's the most important part. Now please understand that it is the very basic quality of a soldier and an army person, that an army person is always someone who is very realistic, who accepts the practicality and who always accept that is a truth at a particular moment. That is why an army person or a soldier never gets impacted from a situation, क्योंकि वो सच्चाई को मानता है. And when someone accepts the reality, he always lives in a reality. He never always boasts about something which is imaginative or something which is not real. सेल्फ अप्रेजल और सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट एक ऐसी ही कड़ी है जिसके अंदर आपकी फौजी का ये वाला पार्ट चेक करा जाएगा कि आपके अंदर ये चीज है या नहीं है. लाइक आई विल गिव एन एग्जांपल. When you are on a war front and you already know that you are climbing up and the intruder is sitting on the peak and they have all the settled armed and ammunitions and you have the limited bullets, आपके पास जो असला है वो बहुत limited है. Now in this case, an army person who is leading the battalion, the one who will be the officer, a sensible officer, he will always accept the very fact that yes, they are more strong in comparison, the position that they have, the arms and ammunition they have, and we do not have that. So accepting this reality, the army men will always make a strategy which determines to be a winning strategy. वो strategy वो बनाएगा जिससे वो जीत सके. वो इस हवाबाजी में नहीं चलेगा, नहीं जी हम मार देंगे, हम कर लेंगे. One has to be very sensible. This is called as effective intelligence, which is the first officer-like quality. SDT, self-description test, मतलब self appraisal. Self को आपको describe करना है. क्यों दिया गया है? Just to see that आप अपने बारे में ही कितना जानते हैं. और secondly, अगर जानते हैं तो क्या सच में वही लिखते हैं या नहीं लिखते हैं. And on top of it, जो आप यहां लिखोगे, they will even cross check the personality which is getting showcased from TAT, VAT, SRT. Is it same what you have written or it is contradicting? अब आप सोच सकते हो कि कितना साइंटिफिक और प्लान्ड है ये पूरा SSB का सिस्टम. Such the overall process has been thought at such a deep and subtle level that you can't even imagine. तो SDT आपकी इसी क्वालिटी को चेक करने के लिए कि आप अपने बारे में जो लिखते हो क्या आपको पता भी है अपने बारे में. नंबर 2, अगर पता है तो आप सच एक्सेप्ट करते हो या नहीं करते हो, और करते हो तो देन इट विल बी इवन असेस्ड एट अ लेवल कि जो आपने टैट, वैट, SRT में जो आपकी पर्सनालिटी निकल के आई है, क्या वो कॉन्ट्राडिक्ट तो नहीं कर रही जो आप अपने बारे में बता रहे हो. This is the importance of SDT, and let me tell you, many of the candidates never understand this importance.
वो ये सोचते हैं कि SRT के बाद SDT सबसे सिंपल लास्ट टास्क होता है, एंडिंग टास्क होता है, बहुत आसान है, अपने बारे में लिखना है, घर से तैयार करो, रट्टा मार के चले जाओ। और वो सारे कैंडिडेट्स मार खा जाते हैं, वो कभी रिकमेंड नहीं होते, बिकॉज दिस इज अ कैच। व्हाट यू हैव शोन इन द स्टार्टिंग 3 टेस्ट is actually something which is your true personality because it has come something spontaneously. आखिरी वाला आप प्रिपेयर्ड करके चले गए। ऊपर से जब आपसे आपके बारे में पूछने को बोला, एवरीवन इज स्मार्ट इनफ, आप सारे बड़े समझदार हो। हर बंदा कहता है जी मैं अपनी खामी की बात क्यों करूं, अच्छी अच्छी बातें। सो यू कैन अंडरस्टैंड देयर फ्रॉम द टेस्ट योर पर्सनैलिटी इज रिफ्लेक्टेड वेयर 10 शॉर्टकमिंग्स आर वेरी क्लियरली लाउडली दे आर कमिंग। यहां आप उनकी कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं जी नहीं मैं तो इसमें भी अच्छा हूं, इसमें भी अच्छा हूं, यू ऑटोमेटिकली टेल साइकोलॉजिस्ट वेरी लाउडली एंड वेरी क्लियरली दैट प्लीज डू नॉट रिकमेंड मी। आप बता देते हो कि मुझे रिकमेंड मत कीजिएगा। सो SDT इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट। प्रेशर के बाद उसको लाइट न्यूट्रल सिर्फ क्यों रखा गया है, वो इसलिए नहीं रखा गया कि आप उसको कैजुअली ले लीजिए, वो इसलिए रखा गया क्योंकि एक और छुपे हुए फौजी का आपके अंदर चीज को चेक करना है कि क्या आप अपने बारे में जानते हैं, और अगर जानते हैं तो सच्चाई को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। दैट इज व्हाई दिस टेस्ट हैज बीन, और इसको न्यूट्रल इसलिए ही करा है क्योंकि जनरली होता क्या है, जब लोग जंग जीत के आते हैं ना, तो जीतने के बाद वो निश्चिंत हो जाते हैं और पता लगता है एक छुपा हुआ इंट्रूडर बैठा हुआ था एंड यू वन द मिशन एंड इन द एंड ही केम और उसने आपको शॉट कर दिया। जो एक समझदार होगा हमेशा सिपाही, वो कभी भी ये गलती नहीं करेगा। उसकी आंख दिमाग इतनी चौकन्ना होगी कि वो जीतने के बाद भी उस खुशी को एंजॉय भी करेगा, बट उस खुशी में भी बह नहीं जाएगा, अपनी जिम्मेदारियों के साथ बिल्कुल एक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पे कंट्रोल रखेगा। सो आई बिलीव यू हैव अंडरस्टूड दैट what is SDT and what is the importance of SDT, which majority of aspirants take very lightly when I have spoken with them, and there they fall into a prey of this. इस जाल में वो फंस जाते हैं। Now let me tell you one more step forward. SDT में जो आपसे पूछा जाता है अपने बारे में, वो भी इतना बढ़िया तरीके से पूछा जाता है या इतना प्लान्ड है कि जो आपकी अंदर छुपे हुए फौजी या आपके अंदर वो है या नहीं है उसको और क्लोजली दिखाता है। सो इन SDT you will be asked couple of on a particular heads you need to self appraise yourself. आपको अपने बारे में लिखना है, like what's the opinion of the parents about you, teachers about you, friends about you. आपका अपने बारे में खुद का ओपिनियन, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेसेस, वो क्या चीज है जो आप अपने अंदर डेवलप करना चाहते हो। So likewise you have 7-8 heads under which you have to write. Total time allotted to you in SDT is 15 minutes, which is quite a good time to handle. और बहुत सारे एस्पायरेंट्स को तो वो बहुत ज़्यादा लगता है क्योंकि वो यहीं बहुत बड़ी गलती करते हैं, वो पूरा प्रिपेयर होकर चले जाते हैं और वहाँ जो रटते हैं वो लिख देते हैं और वो फंस जाते हैं। Now the idea is you can understand from all these heads what parents feel, what your friends feel, what you yourself feel, teachers feel, strength, weakness. एक जो सच्चा फौजी होगा या जो genuinely एक ऑफिसर होगा, he will always accept and he will always realize his weakness, strength, and he or she always knows that what the other person feels, because इसी को तो बोलते हैं कि एक फौजी की आंख चील की आंख होती है। That is why a person can make that mission accomplish which no one can think of. Peak 719 पे जब कारगिल में हमारे फौजियों ने कब्जा करा था, वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल काम करा था। उन्होंने इम्पॉसिबल को बनाया था आई एम पॉसिबल। तो वो आई एम पॉसिबल कब बन पाया था? वो आई एम पॉसिबल तभी बन पाया था क्योंकि उस हर सिपाही को अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपने बारे में पूरा ज्ञान था कि मैं कहां से कितना क्या क्या चीजों को एक्सपैंड कर सकता हूं। That is why if you know about yourself, you can touch any dimension. It is not about just forces. You can touch any dimension if you really know about yourself. So SDT में आपसे ये चीजें पूछी जाएंगी, 15 मिनट मिलेंगे, and that is why you have to. That is the way you have to handle it. I believe you have understood what is SDT,
importance, where aspirants do a mistake, why it is so important. Now let's come to a fact that how you have to perform, how you have to deal with SDT. Now, number one, very important way, if you feel and if you want that whatever you write here, it should not be contradicting with whatever personality has been reflected from the 3 tests, TAT, VAT and SRT. इन तीनों में जो आपकी पर्सनालिटी निकल के आई उससे कॉन्ट्राडिक्ट ना करें, तो उसके लिए मैं आपको एक टिप दे रहा हूं, एक टूल दे रहा हूं, एक तरीका दे रहा हूं. तो आप क्या कीजिए, जो जितने भी हेड्स हैं, योर ओपिनियन अबाउट पेरेंट्स, टीचर्स, फ्रेंड्स, खुद का स्ट्रेंथ, वीकनेस, आप क्या अपने अंदर इंप्रूव करना चाहते हैं, इसके अंदर से पेरेंट्स वाला, टीचर्स वाला, फ्रेंड्स वाला, स्ट्रेंथ और वीकनेस, आप इसको लिखो और उन रिस्पेक्टिव लोगों से पूछो कि यार मेरे लिए मेरी जो एक्चुअल पर्सनैलिटी है, आप बताओ क्या ये सही है. बिल्कुल ईमानदारी से लिखना. टीचर्स वाला लिखो, टीचर से ही पूछो, ईमानदारी से लिखना, लेट टीचर टेल. तो आपको ये पता लग जाएगा आप लिखते वक्त, क्योंकि मैं आपको एक चीज बता देता हूं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, बड़ी बारी क्या होता है कि हम दिल से ईमानदार होना चाहते हैं बट हो नहीं पाते. बिकॉज प्रॉब्लम इज जो इंटेलेक्ट है ना, इंटेलेक्ट, दिमाग की एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि इंटेलेक्ट इज अ शार्प नाइफ. वो आपकी आइडेंटिटी को हमेशा प्रोटेक्ट करेगी. आइडेंटिटी का मतलब, अगर मैं हूं, मेरा दिमाग हमेशा वही काम मुझसे करवाएगा जिससे मेरी आइडेंटिटी खराब ना हो, जिससे उज्जवल चुग खराब ना हो. तो मैं कुछ भी लिखूंगा तो मेरा दिमाग हमेशा सबकॉन्शियस में बिल्कुल यही काम मेरे से कराएगा. जहां मैं कुछ भी ऐसा लिखूं, ऐसा ना लिखूं जिससे मेरी छवि खराब ना हो, मेरी आइडेंटिटी. राइट. सो बहुत बारी क्या होता है, हम करना काम ऑनेस्टली चाहते हैं बट हम नहीं कर पाते. सो द बेस्ट वे फॉर coming to a true self appraisal which is absolutely correct and honest, the best way is आप लिखिए और उस रिस्पेक्टिव जिसका वो ओपिनियन उससे चेक कराइए कि मैम आप मेरे बारे में, आपको जो मेरी आपकी इमेज है और मैं जिस टाइप से हूँ, जो मैंने लिखा आपको लगता है कि ये सही है या नहीं है. इन द सेम वे यू डू इट विद योर पेरेंट्स, फ्रेंड्स, और तीनों को जब दिखाओगे तो उन तीनों को आप अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस भी दिखाओ. जस्ट परफॉर्मिंग दिस एक्टिविटी विल सॉर्ट योर प्रॉब्लम कि जो आप वहां लिख रहे हो वो कॉन्ट्राडिक्टिंग है या नहीं है, या ये ऑनेस्टली ट्रूली योर पर्सनालिटी है या नहीं है, या आप चाह करके लिखना सच चाहते हो बट वो लिखा नहीं जा रहा, ये आपकी पूरी प्रॉब्लम को सॉर्ट कर देगा. अंडरस्टूड. आप इस टूल को यूज कर लीजिए. सेकेंड इंपॉर्टेंट विच यू हैव टू कीप इन माइंड फॉर परफॉर्मिंग वेल इन दिस, एंड दैट इज, जब आप एसडीटी के लिए जाइए तो घर में जब आप तैयार होके जाएं, यानी कि when you are preparing or just having an overview of SSB before going for SSB, at that time इसका कंटेंट रट्टा मार के प्लीज तैयार करके मत जाना. ये गलती मत करना. मैम ने बोल दिया कि हाँ बच्चे बिल्कुल आपने जो लिखा है एकदम सही है, यही आपने जो लिखा है यही आपकी पर्सनालिटी. अब आप कहोगे कि मैं इसको रट लेता हूँ. नो, what you need to do is just keep a clear idea and image of your personality with in context to every head. Like मोटा मोटा थॉट्स, आपके थॉट क्लियर हो, व्हाट यू हैव टू राइट, द ओपिनियन ऑफ पेरेंट्स, ओपिनियन ऑफ टीचर, ओपिनियन ऑफ फ्रेंड्स, स्ट्रेंथ, वीकनेस, व्हाट यू वांट टू इंप्रूव आफ्टर डिस्कसिंग एंड गेटिंग क्रॉस चेक विद देम. जस्ट कीप अ क्लियर थॉट, डोंट प्रिपेयर योरसेल्फ. जिन लोगों की अंग्रेजी कमजोर है वो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लें, बट प्रैक्टिस के बाद वो रट्टा ना मारे. जस्ट गो विद द क्लियर थॉट्स, एंड जस्ट विद दैट क्लियर थॉट, simply in that 15-minute write, that's a good amount of time to write, आप लिख पाओगे, and whatever will come will not going to contradict, will always be true personality and will be very genuine. Because what happens when we train our minds ना, जब हम किसी चीज को रट्टा मार के ट्रेन करते हैं और लिखते हैं, तो it is always possible and the probability is very high that we'll definitely commit a mistake. क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम उस प्रेजेंट में उसको नहीं कर रहे हैं, हम वो पुरानी चीज को याद करके लिखने की कोशिश कर रहे हैं. अब वो पुरानी को याद करते करते जो हम लिख रहे हैं उसमें कुछ गलत हो गया. सो जस्ट गो विद अ थॉट. कोई कॉन्ट्राडिक्शन अगर अपने को नहीं चाहिए तो यू जस्ट हैव टू गो विद अ थॉट, एंड दैट इज क्लियर थॉट ऑफ ऑल द ओपिनियंस, डोंट क्रैम देम, एंड गो देयर एंड सिंपली राइट इन 15 minutes. So this is a second tool for performing very well in SDT. And third and the last most important is, at times it could happen that you have those weaknesses which are
mandatory for being an officer, like courage. आपको डर लगता है, डरपोक हैं आप. Now being honest is very important, but the fact is if you become very honest and you simply write that I am a fearful person, you will be taken off, or in other words you will not get the green signal, because something which is your weakness is something the priority of forces, they will not accept you. So at times, at places where you have this particular thing where a particular weakness is the priority of forces, in that case you have to be bit smart. आपको थोड़ा सा smart play करना पड़ेगा. So in that I would suggest you, please write something else as your weakness which does not make a big challenge for the people. Like you can write simply that at times when I have to talk with so many people in English, so I'm not very good at English, so this is my weakness, that I am not flawlessly able to talk with them in English. So this is a weakness. So now you can tell them this weakness, right? But this is a weakness, but at the same point of time this is not a priority of Indian Armed Forces, so this makes sense. But never ever write though that particular weakness which is the mandate, or which is indirectly one of the important officer-like quality, or which demonstrates an officer-like quality. That is very important, you have to keep in mind. And lastly, when you are going for the whole SDT, जब आप पूरे SDT को कर रहे हैं, उसमें जो भी लिख रहे हैं, please write in a neat and clean handwriting. Prefer, please, there should not be any cutting. Write simple, clean handwriting, and that's all. You will be able to perform very well in SDT, and there will not be any contradiction, and definitely you will outperform in SDT. And it is one of the very, very important tests, as I have already suggested. So I believe it's clear to you guys that what is SDT, how you have to perform in SDT, and one more important thing, after this episode also and in the last episodes also, the ones who have not performed those interactive tests published on the official page of SRT, VAT and this, you just perform those tests, and after performing those tests you are requested that click a photograph of that test where you have written all these things and post it in the comment section. I will also personally evaluate all those tests that we will be receiving, and then we'll respond it to you, ताकि आप लोगों को guide हो जाए, clear हो जाए, ठीक है? So आप उसमें post कर दीजिएगा. So I believe it's clear to you. So here we come to the conclusion of psychology, and the next episode we will be starting off with the new GTO interview, and then finally I'll be taking the PABT as well. So thank you guys for joining me live once again, and once again I really love you all. Thank you once again. Bye bye, take care. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you.